नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारत रशिया विशेष आनी विशेषाधिकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारी खातीर राष्ट्राध्यक्ष पुतिनांच्या तेंक्याचें आनी वैयक्तीक वचनबद्धतेचें कौतुक केलें. राष्ट्रपतींनी नमूद केलें की ही भागीदारी शांतता, स्थिरता आनी परस्पर सामाजीक, अर्थीक आनी तंत्रीक प्रगती खातीर सामायिक वचनबद्धते खातीर निर्देशीत आसा. भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित वर्ष 2025 हमारे बहुआयामी संबंधों के लिए अत्यंत सफल रहा है. उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, सिविल, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा, संस्कृति तथा पीपल टू पीपल संपर्क सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज हुई है. भारत आनी रशियान 2030 मेरेन द्विपक्षीय व्यापार $100 अब्ज मेरेन वाडोवपाचें वचन दिलें. काल नवी दिल्लीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे वांगडा भारत रशिया वेवसाय मंचात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नमूद केलें की दोनूय फुडाऱ्यांनी हालीं केल्ल्यो चर्चा दोनूय वटांनी मजबूत क्षमता दर्शायतात की द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य वेळे आदींच साध्य जातले. वेवसाया खातीर सरलीकृत आनी अंदाजे यंत्रणा तयार करतात हाचेर तांणी भर दिला. भारत आनी युरेशियन अर्थीक संघा मदलो मुक्त व्यापार कबलातीर चर्चा सुरू जाल्या अशेंय तांणी नमूद केलें. भारताच्या कुशळ कामगारां विशीं उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें, आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है. रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है. जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी. ईव्ही उत्पादना विशीं भारत आनी रशियेमदल्या वेपार संबंधांचेर तांणी सांगलें, भारत अफोर्डेबल, एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है. रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है. हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक इसमें साझेदारी कर सकते. इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं. मतदार वळेरी पुनरीक्षण नोव्हेंबरासावन गोंयांत सुरू जाला. SIR फॉर्म कशें भरचें ताचो तपशील दिवपी आसा ही माहिती. तुमकां खबर आसतले आता SIR चालू आसा आनी हे SIR हे तुमकां फॉर्म भरचे पडटा. तुमकां तर कितें कळना जाल्यार हांव तुमकां हेल्प करूंक शकता. आता हे आमी फॉर्म भरया न्ही. पळय हे फॉर्म भरपाचे कशें, पयलीं तुवें डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबायल नंबर, फादर नेम आनी मदर नेम हो कॉलम तुवें भरपाचो. आनी जो हो कॉलम आसा द डिटेल ऑफ इलेक्टर इन इलेक्टर रोल ऑफ द लास्ट SIR तितून हो कॉलम आहे. हो कॉलम भरपाक तुका हांव हेल्प करतलो. तसोच आनी कॉलम आसा तितून डिटेल्स ऑफ रिलेटिव्ह हुज नेम वॉज गिवन इन प्रिव्हियस कॉलम इन द लास्ट SIR म्हणजे हांगा कोणाची भुरगीं आसतली तेका आमी प्रोजेनी म्हणटा. कॉलम हांगा हो कॉलम तुमकां भरपाक हांव हेल्प. तशेंच मागीर हे सगळें जावन हांगा तुवें सायन करची पडटली. हे आमचे एन्युमरेशन फॉर्म हे भरून तुवें म्हाजे कडेन दिवपाचे. हालींच आयिल्ल्या आडमेळी उपरांत दिल्ली विमानतळा वयली विमान येरादारी ल्हव सुरू जाता आनी सामान्य जाता. एका सुचनापत्रांत दिल्ली विमानतळ प्राधिकरणान प्रवाशांक म्हायती दिल्या की कांय इंडिगो विमान कंपन्यांच्या उड्डाणार परिणाम जायत उरतलो. प्रवाशांक गैरसोय टाळपाक विमानतळार वचपा आदीं एअरलायन्सा कडेन नवीन विमान स्थिती तपासपाचो सल्लो दिला. प्रवाशांक प्रवासांत आडमेळ कमी करपाक आनी सुरळीत प्रवास अनुभव सुनिश्चित करपाक तांची टीम सगळ्या भागधारकां कडेन सक्रीयपणान समन्वय सादता अशें प्राधिकरणान म्हळां. सॅन्टियागो हांगा जाल्ल्या FIH ज्युनियर बायलां विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या ज्युनियर बायलां हॉकी पंगडान तांच्या निमण्या पूल C खेळांत आयर्लंडाचेर 4-0 असो दणदणीत विजय मेळयलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश, उदेंत राजस्थान, झारखंड आनी ओडिशांत कांय सुवातींनी थंडीची ल्हारां येवपाचो अदमास काडला. देशाच्या ईशान्य वाठारांनी तशेंच हिमाचल प्रदेश आनी ओडिशा हांगा ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखे मेरेन सकाळीं दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलां. तशेंच फाल्यां मेरेन अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर कांय सुवातींनी वीज आनी वादळी वाऱ्या वांगडा गडगड मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.